We're building India's number one same-day delivery platform for D2C businesses and e-commerce businesses. While I'm not a very firm believer of MBAs, but मैंने भी तब शुरू किया था जब मैं बिल्कुल स्कूल से ग्रेजुएट हुआ था, कॉलेज जा रहा था, गॉट इनटू दिल्ली यूनिवर्सिटी। 2020 तक उस बिजनेस को स्केल अप किया, 8 फिगर रेवेन्यू क्लोज किया, reached out to 20-30 CXOs on LinkedIn. One responded. He happened to be the CEO of Baskin Robbins back then. एक्चुअल में क्या सेम डे डिलीवरी उतना यूटिलिटी रखता है कस्टमर के लिए? क्या एक्चुअल में उतना इंपॉर्टेंट है सेम डे डिलीवरी? But we also feel we're fairly mature for Shark Tank. When I wanted to bring Ashrir on board, I messaged him once. At that point in time, I think he was busy with some personal issues, and he said, Madhav, it's not the best time to invest. आज के जो हमारे गेस्ट है ये हेल्प कर रहे हैं D2C ब्रांड्स को उनका कस्टमर एक्सपीरियंस और डिलाइटफुल बनाने में बाय इट्स सेम डे डिलीवरी कॉन्सेप्ट। इनका नाम है माधव। इज अ फाउंडर ऑफ Zippee, जिसमें काफ़ी रिनाउंड इन्वेस्टर्स भी हैं जैसे कुणाल शाह, पीयूष बंसल, अश्नील ग्रोवर एंड मैनी मोर। माधव ने कॉलेज टाइम में ही एक चाइनीज आउटलेट स्टार्ट किया था जो कि आज इवॉल्व हुआ है एक लॉजिस्टिक्स स्टार्टअप में, जिसकी स्टोरी हम इस पॉडकास्ट में जानेंगे। सो लेट्स बिगिन। हाय माधव, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टुडे। आई एम वेरी एक्साइटेड टू होस्ट यू। Good to be here, Manav. और मैंने जब आपके बारे में पढ़ा कि हाउ यू आर डूइंग सिमिलर थिंग बट इन अ स्मार्टर वे लॉजिस्टिक इंडस्ट्री में, मैं बहुत ही एक्साइटेड था तभी से आपसे बात करने के लिए। और मैंने देखा आपने जीपी 3 साल पहले स्टार्ट किया, बट आपको एंटरप्रेन्योरियल जर्नी लगभग 9 साल तक का रहा है। तो हाउ हैज बीन द फुल 9 इयर्स, और स्पेसिफिकली जीपी में आपका 3 साल में ग्रोथ कैसा रहा? Good, yeah. I think the journey has been absolutely thrilling, and of course exhilarating since the last 8-9 odd years. मैंने भी तब शुरू किया था जब मैं बिल्कुल स्कूल से ग्रेजुएट हुआ था, कॉलेज जा रहा था, गॉट इनटू दिल्ली यूनिवर्सिटी। उसमें इतना काफी टैक्सिंग टाइम होता नहीं है, तो थॉट आई डू समथिंग एज अ साइड हसल। क्लाउड किचन का धंधा शुरू किया। जब कॉलेज से ग्रेजुएट किया 2018 में, तो 3 या 4 क्लाउड किचन चल रहे थे। डिसाइडेड टू स्केल अप इन दैट इंडस्ट्री, सोचा कि उसी में स्केल करता हूँ। एंड 2020 तक उस बिजनेस को स्केल अप किया, 8 फिगर रेवेन्यू क्लोज किया। We were a team of about 30 odd people that time, including all of the store crew members. But then COVID impacted us. The first wave of COVID impacted us, and having built brands over 5 years, 6 years back then, we felt it's important to now enable brands using our dark stores that we've already sort of set up, right? Reached out to 20-30 CXOs on LinkedIn. One responded. He happened to be the CEO of Baskin Robbins back then. He mentioned that Baskin Robbins is also going through tough times. सारे पार्लर्स बंद पड़े हैं, सेल्स हो नहीं रही हैं, तो उनको भी क्लाउड किचन्स, डार्क स्टोर्स का एक्सेस चाहिए था. Signed that brand up, signed the second brand, helped brands expand using the network of dark stores and cloud kitchens we had back then. And then 2022, we figured out that अब cold chain से पूरा we have sort of saturated a lot of categories within cold chain. Let's go broader. Let's look at the D2C segment. D2C is very, very exciting. Consumption is growing. Brands are being formed and created from every corner of the country. And that was an opportunity that we wanted to unlock, right? So we set up large carpet dark stores to not only store the products, also deliver them to the customers on the very same day. So launched same day delivery 2022. Fast forward to today, yeah, we're operating same day delivery across 10 cities in India. And we're enabling about 125 plus brands across sectors, categories, stages. Team of about 350 people in total. 40 people is basically our corporate team. We're headquartered out of Gurgaon. दैट्स ग्रेट, दैट्स अमेजिंग। आपने जो पूरा जर्नी बताया कि, और सबसे बेस्ट पार्ट वाज कि आपने जब कोविड इम्पैक्ट किया 30-40 सीईओ को रीच आउट करना, और दैट आल्सो रिक्वायर्स परसिस्टेंस, बिकॉज कई बार होता है कि 5-10 को रीच आउट किया एंड रिस्पॉन्स नहीं आता, तो लगता है कि हो सकता है ये वर्कआउट नहीं करेगा, ये ट्राई, लेट्स ट्राई समथिंग एल्स। सो दैट वाज अ बेस्ट पार्ट। और अगर मैं जीपी में ही और अगर डीप डाइव करूं, तो आप अभी सेम डे डिलीवरी आपने बताया कि आप दे रहे हैं। सो आप 10 सिटीज में अवेलेबल हैं। तो
एक्चुअल में क्या सेम डे डिलीवरी उतना यूटिलिटी रखता है कस्टमर के लिए? क्या एक्चुअल में उतना इंपॉर्टेंट है सेम डे डिलीवरी? यार जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ रही है और कस्टमर के पास नए नए ऑप्शंस है ना, तो कस्टमर का जो कंजम्पशन बिहेवियर है ना वो इवॉल्व होता रहता है। आज से 5 साल पहले की बात करी जाए तो जो चीज़ एक 3 to 5 डेज काफ़ी डिलाइटफुल लगता था, वो 3 साल पहले 2 डे डिलीवरी काफ़ी डिलाइटफुल लगती थी। अब मे बी आज से 1 साल पहले अमेजोन प्राइम की 1 डे डिलीवरी काफ़ी डिलाइटफुल लगती थी। अब 10 मिनट 20 मिनट 30 मिनट काफ़ी डिलाइटफुल लगती है, राइट? तो what is generally a good to have becomes a must have with time because user stickiness increases, right? So consumption behavior also evolves, and yeah, now same day delivery is also going to very quickly wear out in terms of its life, and we're also moving towards 2 hour deliveries as a platform. We ओ plan to launch 2 hour deliveries in H2 of this year. ओ दैट्स अमेजिंग। सो अगर जैसे आप अगर 2 आवर डिलीवरी में जा रहे हैं, तो क्या ये बोलना सही रहेगा कि अब आपके कॉम्पिटिटर डीटीडीसी डिलीवरी नहीं होके ब्लिंकिट जेप्टो होने वाले हैं, बिकॉज दे आर कमिटिंग 10 मिनट्स डिलीवरी या लास्ट मिनट डिलीवरी? तो आप इसको क्या एज ए चैलेंज देखते हैं, और आप कैसे इसको हैंडल करेंगे? Yeah, so there is a very big difference between Zepto, Blinkit, Instamart, and players like say us and delivery, right? So Zepto, Blinkit, Instamart क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, कस्टमर फेसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं। वो ब्रांड्स के लिए सिर्फ डिलीवरी नहीं करते बट डिमांड भी जनरेट करते हैं, राइट? तो या कस्टमर उनके पास जाता है, वो ऑर्डर प्लेस करता है और ऑर्डर प्लेस करने के बाद उसे 10 20 30 मिनट डिलीवरी मिलती है। Platforms like Zippee are more like the FedEx of quicker deliveries. We are enablers. ओके हम डिमांड जनरेट नहीं करते, हम टिपिकली पोस्ट ऑर्डर एक्सपीरियंस के बाद बैठते हैं। हम पोस्ट ऑर्डर एक्सपीरियंस देखते हैं, तो पूरी ऑर्डर की लाइफ साइकिल के सेकेंड हाफ ऑफ द लाइफ साइकिल में वी आर मोस्टली सिटिंग। जब ऑर्डर प्लेस हो ओके जाता है, यूजर चेकआउट कर देता है, उसके बाद ट्रांजैक्शन हमारे पास शिफ्ट होती है। ओके ओके। मीन्स एक तरह से आप एक कंपनी का बैक एंड साइड में ज्यादा है, जैसे ब्लिंकिट जेप्टो ये फ्रंट एंड भी देखते हैं, ये फेस वैल्यू भी रहते हैं इनका। तो आप एक तरह से कंपनी के बैक एंड में रह के कंपनी को हेल्प करते हैं। यार वो देखने का नजरिया है, आप किस तरफ से ओके देखते हो, राइट? आप ओके यूजर साइड से देखते हो तो आपको फ्रंट एंड नजर आएगा बिकॉज यू ब्रांड के प्रोडक्ट हम ही आपको डिलीवर कर रहे हैं। ओके ब्रांड की तरफ से देखोगे तो हम बैक एंड नजर आते हैं। तो वो देखने के नजरिए पे डिपेंड करता है, बट वी आर टिपिकली एनेबलिंग द इंटायर कस्टमर जर्नी। ओके ओके। सो अगर मैं इसकी यूनिट इकोनॉमिक्स में बात करूं, तो अगर कोई डी टू सी ब्रांड का मैं कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करता हूँ, मान लीजिए 100 रुपए का, तो उसका यूनिट इकोनॉमिक्स वर्क कैसे करेगा, और आपका बिजनेस मॉडल कैसे रन करेगा उसमें? बता देता हूँ। सबसे पहले हम 100 रुपये वाले प्रोडक्ट की डिलीवरी कर नहीं पाते बिकॉज 100 रुपये वाली कैटेगरीज हमें अफोर्ड नहीं करती। तो हम टिपिकली 500 600 की एवरेज ऑर्डर वैल्यू वाली कैटेगरीज के ऊपर चलते हैं, ऑल द वे अप टू 30 40 50 थाउजेंड रुपीज। ओके इकोनॉमिक सिंपल वर्क करती है यार। लार्जर इकोसिस्टम में जूम आउट करूँ तो लॉजिस्टिक्स इज टिपिकली 10% ऑफ योर बैलेंस शीट, कैसे भी देख लो। तो डार्क स्टोरेज प्लस लास्ट माइल डिलीवरी इज टिपिकली 10 odd%। ऑफ कोर्स एवरेज ऑर्डर वैल्यूज चेंज करती हैं। अब एक 3,000 रुपए की स्पीकर और एक 500 रुपए की फेशियल क्रीम, दोनों आधे किलो की है, दोनों सेम लेंथ ब्रेड्थ विड्थ की हैं, तो कॉस्ट ऑफ डिलीवरी दोनों की सेम ही है, बट परसेंटेज ऑफ कॉस्ट वेरी कर सकती है, राइट? बट राइट एवरेज अगर बहुत ब्रॉडली जूम आउट करके बताऊं, 10% 12% कॉस्ट ऑफ मिड एंड लास्ट माइल लॉजिस्टिक्स होती है किसी भी ब्रांड पीएनएल पे। उससे ज्यादा हो जाती है तो अनहेल्दी होता है। तभी कह रहा हूँ मैं, 100 रुपए वाली कैटेगरी हम टच नहीं करते। ओके गॉट इट। एंड इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट्स अगर मैं बात करूं, आर यू राइट नाउ प्रॉफिटेबल या लॉस मेकिंग? Yeah, so as a growing company, we invest a lot into growth, right, and technology. ओके But having said that, certain markets have already turned profitable and are cash generating markets for us. These are mature markets. And evolving and emerging markets are typically markets where we have to invest some money in the first few months to sort of get them at mature, steady state levels. ओके So we look at it not at a organization level, but we look at it at a very cohort level. ओके ओके गॉट इट। सो अगर आज किसी D2C ब्रांड को आप वो आपके प्लेटफॉर्म में जिपी के साथ अगर पार्टनर करता है, तो हाउ इट वर्क? जैसे आपके जो डार्क स्टोर्स हैं, वहां पे उनके प्रोडक्ट्स रखाएंगे, और फिर जैसे ही ऑर्डर प्लेस हुआ वहां से कस्टमर के पास जाएगा, या इज इट डिफरेंट?
यार तो यूजर की जर्नी ऐसे होती है कि अगर आप किसी भी ब्रांड पे ऑर्डर प्लेस करते हो ना, तो ऑर्डर सबसे पहले एक ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम ओएमएस सिस्टम में आता है। ओएमएस सिस्टम में आने के बाद पिन कोड या जिप कोड के हिसाब से वो ऑर्डर बंट जाता है। दिल्ली एनसीआर या नॉर्थ इंडिया के पिन कोड में भी दिल्ली चले जाएंगे, साउथ इंडिया बैंगलोर हैदराबाद चेन्नई के पिन कोड से बैंगलोर चले जाएंगे। तो ऑर्डर असाइन हो जाते हैं डार्क स्टोर पे दो फिल्टर से, एक पिन कोड एंड एक एसकेयू अवेलेबिलिटी। एसकेयू ओके अवेलेबल होना चाहिए उस ऑर्डर का। स्टोर पे जाने के बाद प्रोडक्ट्स ऑलरेडी स्टोर्ड होते हैं। ऑर्डर आने के बाद वी स्टार्ट प्रोसेसिंग द ऑर्डर, वी पिक पैक the order, do a quick QC check, and then keep it ready for dispatch. Once our delivery sort of deliveries start for the day, we patch them into routes and eventually dispatch them for delivery, and that's when they reach the user on the very same day. दैट्स अमेजिंग। एंड इसमें आप कैसे पैसा बनाते हैं? वो आप डार्क स्टोर में रख माल को पैसा लेते हैं, या फिर आप सिर्फ डिलीवरी पे चार्ज करते हैं? So of course, different models, right? But broadly, we believe in charging a flat fees. तो फ्लैट फीस ओके रखते हैं। सबसे बड़ा आज का लॉजिस्टिक का प्रॉब्लम है कि ट्रेडिशनल इनकम्बेंट वेयर हाउसिंग कंपनीज एक ही यूनिट का पहले इनवर्टिंग चार्ज लेती थी वेयर हाउस के अंदर, फिर स्टोरेज पर डे पर यूनिट का चार्ज लेती थी। किसी किसी केसेस में अगर पैलेटाइज्ड वेयर हाउस होता तो पैलेट्स या रैक के स्टोरेज का चार्ज लेती थी, फिर प्रोसेसिंग का, आउटवर्ड का। सो वी सॉल्व दैट रिकंसिलिएशन नाइटमेयर, राइट? दैट्स आल्सो अ कॉस्ट फॉर ब्रांड्स एंड कस्टमर्स। One flat pricing, typically weight sensitive, volume sensitive, not trends and GMV sensitive. ओके ओके। एंड आपके जिपी जब मैंने पढ़ा तो आई सॉ दैट कि जिपी में शार्क भी इन्वेस्टर हैं, यू आर बैक्ड बाय यूनिकॉर्न्स आल्सो, लाइक अश्नी ग्रोवर, पीयूष बंसल, सो यू हैव मेनी इन्वेस्टर्स। सो इसके बाद आप शार्क टैंक में कभी जाएंगे? लाइक यू प्लान टू गो ऑन शार्क टैंक? बिकॉज although you don't need investment because you have already got, but वहां से एक जो मार्केटिंग होता है। Two things here. A, we don't need marketing. We are a fairly B2B play, right? So our go-to market is not television. We have very Okay. different channels of going to market. That being point number one. Point number two, we also feel, while our feelings may be wrong, but we also feel we're fairly mature for Shark Tank. Okay. The opportunity of going live on Shark Tank should be given to uh, very, very early founders who need that visibility, right? So uh, that airtime may be beneficial to other founders. Okay, got it. और आपके इतने इन्वेस्टर्स हैं, आप मेनली आपके सोर्स क्या रहते हैं रीच आउट करने के किसी को भी? लाइक अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट की स्टोरी बता पाए आपने जो पिच करके फिर पैसा उठाया। So you rightly said, right? Ashneer, a bunch of these ones, without getting into many details, but I typically believe in going cold, reaching out, email, WhatsApp, LinkedIn, wherever. When I wanted to bring Ashneer on board, I messaged him once. At that point in time, I think he was busy with some personal issues, and he said, Madhav, it's not the best time to invest. Then I kept giving him updates month on month because I saw real value in him, at least helping on A, of course, access, and B, our product side. And then, of course, I think after 3, 4, 5 months, we met, explained the journey, and eventually he came on board. So, um, two things I believe. One, of course, reaching out cold, there is no problem. The worst that can happen is a person doesn't respond or says no, right? And second, राइट। once a no always doesn't mean a no. So you keep um, sharing updates even if somebody's past the deal and doesn't want to invest. And eventually, if they resonate with the journey and the deal, of course, paths may intersect. जो सबसे बड़ी क्वालिटी अब मैं समझ पाया आपकी, दैट इज परसिस्टेंस। बिकॉज ड्यूरिंग कॉलेज इज ऑल्सो यू स्टार्टेड बीजिंग स्ट्रीट, और जब नहीं चला देन ऑल्सो यू रीच आउट टू मेनी फाउंडर्स, और अभी भी जब पिच करना होता है यू एवरी मंथ गिव अपडेट अगर रिस्पॉन्स नहीं भी आता है तो एक ये जो मैं समझ पाया अभी तक आपके सक्सेस का सीक्रेट। एंड नाउ आई वांट टू आस्क कि आपने काफी अर्ली टाइम में ही अपना एंटरप्रेन्योरल जर्नी स्टार्ट किया, जबकि ट्रेडिशनली ऐसा नहीं होता है। ट्रेडिशनली कोई भी कॉलेज स्टूडेंट
either he goes for MBA या फिर experience लेते हैं, then he start of something of his own. So आपने ट्रेडिशनल पाथवे फॉलो क्यों नहीं किया? Yeah, so my journey was fairly different, right? I started working when I was 18 and alongside college. Uh, तो तब काफी ना साइड हसल था, बिजनेस बिल्ड कर रहे थे, कॉलेज भी जा रहे थे. बट देन इट ऑल इवॉल्व्ड बिकॉज बिजनेस स्टार्टेड स्केलिंग, वी स्टार्टेड फिगरिंग आउट स्टफ. पहले क्लाउड किचन से दूसरे क्लाउड किचन पे गए, दूसरे से तीसरे पे गए. एंड इवेंचुअली जब कॉलेज ग्रेजुएट किया तो there was no need for us to sit on the placement side of things, right? So the idea was always to scale that piece of business. So I think kept hustling, doors kept opening, and the journey kept evolving. सो आपको अभी क्या लगता है कि किसी को भी अगर अपना एंटरप्रेन्योरियल जर्नी स्टार्ट करना है तो सबसे बेस्ट टाइम उसके लिए क्या होगा? सबसे व्हाट इज द राइट टाइम टू स्टार्ट? I think there is no right or wrong time. I think when the I think when the person starts feeling the need to build something big, and sort of fly freely without having a very uh, monotonous structure to day-to-day life, right? So that's the right time. So Okay, as I got mentioned, that every journey is unique, so you can't say MBAs don't help. While I'm not a very firm believer of MBAs, but that doesn't mean that that's not the right path. I think a lot of people make it big there as well. Yeah, I think every journey is unique and absolutely beautiful. ओके, आपने जो बीच में लाइन बोला, यू आर नॉट अ फर्म बिलीवर ऑफ एमबीए, आप उसमें एक बार फर्म बिलीवर मींस आपको क्या लगता है? Yeah, so I feel 2 years of MBA versus 2 years of building any small shitty business. Um, the latter teaches you much more than the former. And I always believe on the job training gives much more learning and adds much more value than sitting in a classroom and listening to lectures and preparing thesis and making projects and all of that, right? So while I may be wrong, but that's what I believe. ओके, दैट्स अमेजिंग. अगर मैं अभी जीपी के, अगर आप बताना चाहिए कि मेजर क्या 3 चैलेंजेस आप अभी जीपी में फेस करते हैं और आप उसको कैसे ओवरकम कर रहे हैं? Yeah, so the space is evolving at a very fast pace, right? So um, 5 day delivery, say 3 days, say 1 day to same day, all the way to 2 hour. I think the evolution is very fast. Not that we can't keep up the pace, but the evolution has been very fast for the industry. And e-commerce was big for the industry. अगर हम इंडिया का landscape zoom out करें, India actually saw a great boost in e-commerce sales from 2010 to 2024, 22, 24, right? And quick commerce saw a parallel boost in revenue from say 2021 onwards. Um, so consumption behavior changed in the last 3 years if you look at it. ओके. And a lot of new categories opened in quick commerce, which is giving a which is giving real tough competition out of nowhere to e-commerce. ट्रू. Stationery has started, festival shopping has started, beauty, personal care out of nowhere. Blinkit is now contributing to a decent, mature single digit number of beauty, personal care revenue. So I truly feel that consumption behavior is evolving, and for us enablers, it is very important and imperative to keep up to the pace. ट्रू. And the second thing is, right, I feel the biggest risk in the business is also moving slow, right? For us to scale fast, as in any business, right? If there are four pieces that the business needs: demand, supply, capital, competence. If you have those four pieces, then I think the fifth piece that you uh, sort of will miss and not make it big is speed. So after demand, supply, capital, competence, it is speed. So speed is very, very important. That's something we are working on now. ये जो आपने स्पीड बोला, दैट इज वेरी ट्रू, बिकॉज
मैं स्निच के फाउंडर का भी इंटरव्यू देख रहा था, उसमें भी उन्होंने कहा कि मैं भी आज वही देख रहा हूँ जो बाकी सब देख रहे हैं। जो बाकी और मेरे में डिफरेंस आ जाता है, दैट इज द स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन। जो स्पीड से वो लोग एग्जीक्यूट करते, जो स्पीड से एग्जीक्यूट करते हैं कोई भी एंटरप्रेन्योर किसी भी चीज को। सो Hmm. या दैट्स वेरी ग्रेट। लास्ट में अब हर बार हर पॉडकास्ट में हम लोग करते हैं कि अपना आइडिया 1 मिनट के अंदर एक फाउंडर को पिच करना है तो वो कैसे करेगा। सो आप आपको 1 मिनट के अंदर जीपी को अगर किसी को पिच करना है इन्वेस्टर को, तो आप कैसे करेंगे? Yeah, we don't even take 1 minute to pitch Zippee. ओके। People generally love reading about what we're building before coming on calls. But if I had to explain what we do at the business in less than a minute, we're building India's #1 same-day delivery platform for D2C businesses and e-commerce businesses. Present across 10 cities, enabling 125 plus brands across sectors, categories, stages. Key focus on personal care, baby care, beauty, food, beverage, gourmet, grocery, electronics, etc., etc. And yeah, team of about 350 people, 35 people on the core team, supported by 6 leaders, headquartered in Delhi, domiciled in India, and yeah, growing 4x year on year. Thank you so much, Madhav, for joining today. It was an amazing session, or looking forward to meet you also someday. Absolutely looking forward to. Thank you so much, Madhav.